No, I remember that. No, I remember that. No, I remember that. सलमान खान को एक्सक्लूसिवली जूम पर याद आया जैकलिन फर्नांडिस का एक पुराना फसाना। ये कहानी है जैकलिन के इनकार की। जैकलिन की प्रोफेशनल लाइफ की ये स्टोरी आपको बताएगी कि उन्होंने कैसे तोड़ दिया था अपना एक बड़ा कमिटमेंट और बाद में सलमान खान के फोर्स करने पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। No, I remember that. She had refused Chris 3. And I called her up and said, what have you done? You've lost the plot. Why would you not do that film? She said, no, I had a date problem, no. I said, you're stupid about how can you not do Chris 3? Yeah. It was the most amazing film to do. And mind you, she was signed for the film. I think even Kangana had called you up and said, why aren't you doing this film? Yeah, she was very sweet actually. Yeah. I had And a that date was, problem. I had a date issue. Yeah, but you should have sorted that date issue out. I mean, And you know, But do you have regrets now that you didn't do the film? at that, of obviously course. she should. No, of course I do. But see, at She that, should, at and that she point, owes like a big apology too because they'd already signed her to Rakesh Roshan and to Hrithik Roshan. Yes. जी हाँ, एक्सक्लूसिवली जूम पर सलमान ने लास्ट ईयर दिवाली पर आई फिल्म क्रिश 3 को लेकर एक बड़ा सच सबके सामने रख दिया है। ये किस्सा है क्रिश 3 में कंगना वाला रोल पहले जैकलिन को ऑफर होने का, जो रिसेंटली तब सामने आया जब सलमान अपनी फिल्म किक की लीडिंग लेडी के साथ जूम से एक्सक्लूसिवली बात करने आए और अपने इसी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान जूम की न्यूज हेड मधुरिता मुखर्जी से बात करते हुए सलमान ने खोल दी जैकलिन की पोल। No, I remember that. She had refused Chris 3. वैसे इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि इतना तो सबको पता है कि क्रिश 3 कंगना से पहले जैकलिन को ऑफर हुई थी, लेकिन डेट इश्यूज के चलते जैकलिन ने ये फिल्म छोड़ दी थी। नई बात यह है कि उस ऑफर को रिजेक्ट करने की कहानी सलमान ने जूम के साथ अपने कैंडिड इंटरव्यू में शेयर की। हालांकि सलमान ने किक में अपनी हीरोइन जैकलिन की सिर्फ लेग पुलिंग नहीं की, बल्कि अपने इस इंटरव्यू में खुद जैकलिन के सामने सलमान उनकी जमकर तारीफ करते नजर आए। I saw her song, and then after she came on to Big Boss to promote Race 2. And I saw the way she was looking there, and then again saw that song, that Lat Lag Gaye. And she has taken care of herself. She has done films, and she's ghusoed into films, and she stood out, in those, in those movies. And she's like this, even Murder 2, and what is the other one? Houseful and stuff. Houseful, Race. So she's struggled her way through, and I just thought that she was supposed to do London Dreams before, and then she chose to do Aladdin, which is again a good choice. They released on the same day. Yeah. That was the funniest thing. Yeah. That was cool. So they had a problem with, and at that point of time, they also needed someone who South Indian. So then Asin. the character changed, and Asin came into the film. So, but there's always this thing of wanting to work with her, and then after so many years of still struggling and doing good work, and being really hardworking and very dedicated and sincere, she deserved break. A break. इतना ही नहीं, सलमान ने तो यहाँ तक कह दिया कि किक में उनकी हीरोइन बनने का कैलिबर बाकी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में नहीं था। We deserve to be working with her because there was actually nobody, and at that point in time that we could have done a film with. I mean, there are lots of actresses and stuff like that, but somebody in this film who had the dates, who is a beautiful looking girl, who dances really well, who is hard working, who's dedicated, who is eager to do a film like this. There was actually nobody. और आखिर में तो हालत ये हो गई कि सलमान से तारीफें सुनकर खुद जैकलिन को पसीना आ गया। और जितनी तारीफ कर रहा हूँ उनके इतने पसीने छूट रहे हैं। Yeah, I know exactly. अब आप ही बताइए भला ऐसा क्यों ना हो, सलमान के सामने अच्छों को पसीना आ जाता है। तो अगर सलमान इस तरह अपनी बात शुरू करेंगे तो सांस तो अटक ही जाएगी ना, कि पता नहीं सलमान इस अंदाज में कौन सी बात रिवील करने जा रहे हैं। No, I remember that. No, I remember that. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।